you okay, you feeling okay Medha, you okay, इसको ठंड लग रही है, इसको जैकेट दे दो. So he's been very very sweet, very kind. अभी भी जो मोमेंट में मैं हूँ इस वक्त, वो मेरे लिए एक रीस्टार्ट ही है. Me and my friends, अगले दिन एग्जाम है, शाम को we sneaked into school और जो हमारी एग्जामिनेशन की बेंच थी ना, उस पे हमने आंसर्स लिखे. You will not believe. Radio Nasha. Hi, Pareee हूँ मैं and you're watching us on Radio Nasha. I love the setup. I'm here to talk about 12th fail, Vikrant and Medha. Welcome to Radio Nasha. जैसे मैंने कहा, for having us. You. And now that you've said Pareee हूँ मैं, I know I've heard you. yes. Too late. I love the setup. मुझे ये देखकर स्कूल याद आ गई. है ना? पहली बार जब मैंने भी देखा था ना, मुझे भी ऐसे ही लगा था. And the best thing is, this is so beautifully aged. Yeah. Right? Yeah. That is what is nostalgic. Right. तो इसी से शुरुआत करते हैं. What kind of students were you? Backbenchers, first benchers, कैसे? I was a bit studious, sorry, but So sorry. No, मैं स्कूल तक मैं थोड़ी फ्रंट बेंचर आप मान सकते हैं. कॉलेज के बाद मैं लास्ट से भी पीछे थी. कॉलेज मैंने पढ़ाई छोड़ती थी. हाँ. I think a lot of it has to do with the uniform. The moment your uniform goes away, ना तो एक अलग sense of personality अलग आ जाता है. Right. I was very good in my studies until I started wearing full pants in school. तो जब full pants पहनने शुरू की तो पता नहीं हीरो बन गए थे हम. तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, मतलब I would only prepare as much as I would need to pass. Okay. But fail हुए हो कभी? Yeah. My first year senior college I failed. Oh. Exams ही नहीं दिए हैं मैंने because I was working that time. Then it's not like really fail. हाँ, but repeat But तो what करना were you पड़ा. working as? I had already started acting professionally. अच्छा तब. जी. तब तक काम करना शुरू हो चुका था. I used to go on very extended outdoors. तो बॉम्बे आ ही नहीं पाए एग्जाम देने के लिए. Yeah. मैं ना ये सोच रही थी विक्रांत एंड कि like I have seen you working. कितने सालों से मैं देख रही हूँ आपको काम करते हुए. You know, it feels like your debut Lutera has completed 10 years. Like oh my god, 10 साल हो चुके हैं. So कब से आप काम कर रहे हो? You still manage to look the same. I think that credit goes to my parents and my grandparents for their genetics. Yeah. It's because of that. But I think my lifestyle has remained the same, na. I think a lot of it also और कभी ध्यान नहीं दिया इतना कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है. वो रहा ही वैसा है. घर का खाना ज़्यादा खाता हूँ. I play a lot of sport. My free time, मतलब if at all I manage some free time, it is always out in a playground playing cricket, football or volleyball or doing some form of activity. And of course it is aided by your genetics as well. Yeah. I'm very excited about the fact that it's a Vidhu Vinod Chopra film. Yes. Because I have been a fan. Yes. मैं तो उनको उनकी फिल्मों के थ्रू ही जानती हूँ. आपने उनके साथ काम किया. What kind of a director is he? Oh, he's just absolutely the best, यार. Come on, I mean, उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे he's Vidhu Vinod Chopra and this that, but he is so incredibly kind. Yeah. He has treated us, Vikrant and I, and all the actors like his own kids. मेरा और विक्रांत का तो actually physically he's held hands, and even when you're in that office, that UPSC office or whatever, there he's holding our hands and he's showing us around and things like that. So literally the entire journey we've worked, he's held our hands throughout, and he's brought out our best. So working with Vidhu sir is like, because he's such a genius of a filmmaker, he expects a certain level of performance from you. His standards are pretty high, so you have to deliver that, and you have to be on your toes. You have to bring out your best, and when you're not bringing out your best, he knows how to get your best. So he'll push your boundaries, he'll push you to the point where your best comes out, and you in that moment don't know how that came out, but it's only in retrospect you feel like, oh, that's what he did, that's how it happened, okay. And then once you're through that journey, you realize how much you've grown as an actor and as a human being. Yeah, it's magical. Yes. Magic. And, as she's so rightly said, you just don't grow as an actor. You grow as a person. And I don't think he will like me saying this, but I really want to say this कि he's such a giver ना. Yeah. उन्होंने अपने जीवन में इतनों की मदद की है, मैं बता नहीं सकता, but briefly अगर मैं कहूँ तो I think he's blessed because he has so many duas and blessings. Yeah. And
a lot of that reflects in his work as well. He's outstanding. I love him. Also, if you notice, जितने न्यूकमर्स को उन्होंने चांस दिया है अपनी फिल्म्स में, मैं न्यूकमर हूँ, इससे पहले भी जो थे न्यूकमर्स थे, it's absolutely amazing. कितने नए लोगों को काम मिला है. मैं ना उन्हीं का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी 12th फेल के बारे में. उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि नसीर साहब ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया. नसीर साहब ने कहा कि अभी तक तुम्हें डायरेक्शन नहीं आता, बट नाउ यू फाइनली लर्न डायरेक्शन. You know, that was such these are wonderful banters they have. They go back such a long way. Such a long way. They are batchmates from FTI. Yes. So yeah. It's amazing. मुझे एक और चीज़ के बारे में बात करनी है about the authenticity of this. You know, we are like finally touching the pulse of you know, of every human being. ये real students हैं इसमें. Yes. Real students, real locations, real professors. आप डॉक्टर दिव्य कीर्ति को भी देख रही हैं इस फिल्म में, who is a veteran in the education sector, and again another giver. He has done so much for aspiring students and civil servants. वो मतलब उसके लिए एक अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा हमें. Also just his words, people in general जो UPSC में है भी नहीं, मैं इतना मोटिवेट होते हैं उनके वीडियो से कि विकास सर के. It's just. But कैसे, मतलब how did वो एक्टिंग कैसे हो पाई उनसे फिर कैमरा के सामने, you know, in sometimes non-actors really will surprise you. And some of the most incredibly celebrated films, like for example Slumdog Millionaire की अगर हम बात करें, जी, और हॉलीवुड हो या हमारे यहाँ हो, some of the most iconic films have had non-actors. It is because they are not acting. It is because they are just bearing their souls. और यही खूबसूरती है. And in our case, it was Vidhu sir's vision. He didn't want secondary actors. He wanted real aspirants. Or then the challenge was on me, because I had to unlearn everything. जो भी इतने साल acting सीखी, वो सब unlearn करना पड़ा. मुझे पूरा टाइम दिया उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए, एंड आई हैड टू मैच अप टू देयर लेवल बिकॉज दे वर सो एफर्टलेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. शुरू में मतलब वो कैमरे से थोड़े से शाय थे. समटाइम्स दे वुड जस्ट लुक इनटू द लेंस, पर उनको समझाना पड़ा था कि प्लीज लेंस में मत देखिए. बट वंस ऑल ऑफ दैट वाज थ्रू, जो इनिशियल जिटर्स थे, आई वाज द वन हु हैड टू रियली अप माय सेल्फ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी इन द फिल्म. इट इज देम जस्ट बीइंग देमसेल्व्स एंड बेयरिंग देयर सोल्स. और इसीलिए वो ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो स्ट्राइकिंग है, बहुत ही मैसिवली स्ट्राइकिंग है. नॉट जस्ट रियल पीपल, इवन रियल लोकेशंस. यू कैन नेवर रिक्रिएट मुखर्जी नगर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर. वो जो दुकानें हैं, वो जो शटर है, वो जो ताला है, वो जो एक पुराना चिपकाया हुआ आधा निकला हुआ पैम्पलेट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ विनोद सर, ओनली बिकॉज ऑफ हिम, नोबडी एल्स. यूपीएससी को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स कहा जाता है. व्हाट इज द टफेस्ट एग्जाम both of you have taken अभी तक अपनी जिंदगी में? Exam like it has to be like a proper exam? नहीं, मतलब metaphorically. Then ये this career only यार, it's been very tough. अरे मतलब आप जब then you come from a different city, not knowing a single soul in Bombay, and when you come from a different city, I think there's also this sense of fear because you don't know anything. क्योंकि हमारा the only idea of films is through fashion, this film, and then they show the, you know, in the industry very like in a certain light. So you're just like, अच्छा ऐसा होगा क्या? So when you enter, you take some time, your baby steps, okay, fearfully, you know, you make up your protection, your guards are up. So it takes that time, and then otherwise also it takes a while to get, like it's taken me 6 years. I'm very lucky. I'm very, very fortunate. I'm working with Vinod Chopra sir so early in my career. But यार test सबसे लंबा यही चला है 6 साल का. और But Vikrant must have been a wonderful co-actor, no? He is a wonderful co-actor. He's a wonderful person. I know. He's always been like, because, and also for him it was very demanding. You know, it's a demanding film in every way. Even then he would just sometimes be like, "You okay? You feeling okay, Medha? You okay? इसको ठंड लग रही है, इसको jacket दे दो." So he's been very, very sweet, very kind, and working with a great actor, it's like a game of ping pong, you know. It's like if I sometimes there was one moment where I improvised something in the moment, and he, being who he is, he has a presence of mind to take that improvisation and throw that back and make it into a more magical moment.
So to work with an actor like that, Thanks, Medha. No, but like everybody knows, it's No, been of wonderful. course. मैंने Wonderful. विक्रांत के बारे में हमेशा ये तो सुना ही है that he's a wonderful actor, but I've always heard people say that how warm Very and how warm. wonderful he is as a person. इसलिए इनसे बात करके हमेशा मजा आता है. Thank you, Pareee. You're like this Pareee who's come from the heaven. Thank you. I love एक और चीज इसमें कि you know it talks about restart. जिंदगी में रीस्टार्ट मोमेंट कौन सा था अभी तक? बहुत आए दिन आते रहते हैं, अभी भी आते हैं. अभी भी जो मोमेंट में मैं हूँ इस वक्त, वो मेरे लिए एक रीस्टार्ट ही है. आई डिड टीवी, आफ्टर टीवी आई मेड द स्विच, आई डिड फिल्म्स, छोटे छोटे रोल्स किए, वो भी एक रीस्टार्ट था कॉन्शियस डिसीजन होने के बावजूद. एंड आज भी एक रीस्टार्ट है क्योंकि 3-3.5 साल बाद मेरी फिल्म सिनेमाज में आ रही है. And it is a restart moment for me because I mean it's been 3.5 years and here I am with a film which is so special to me, so it is a restart moment for me. और रोजमर्रा के जीवन में हम सब करते हैं. You know, there are days when you doubt yourself. Yeah. There are days you wake up in a different spirit. All you have to do is just sort of dust yourself, just shake it off and restart. Yeah. आपके लिए तो स्टार्ट है. मेरा हाँ, बट Restarts भी तो- बट लाइफ का शुरुआत नहीं है. Of लाइफ में course. काफी रीस्टार्ट्स हुए हैं, बट आई रियली यू नो इट्स इन रेट्रोस्पेक्ट लाइक ही सेड, आप जो आपकी जो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बनती है वो उन रीस्टार्ट मोमेंट से ही बनती है. लाइफ अगर इजी रहेगी तो आप वो उस तरह से ग्लो ही नहीं करोगे जैसे आप करते हो. इट्स लाइक योर शाइन कम्स थ्रू हार्डशिप. सो रीस्टार्ट, आई एम वेलकमिंग ऑल द रीस्टार्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ. सो दैट. On a fun note, what's the most creative way आपने cheat किया है एग्जाम में? अरे बहुत किया है. Compass box. Compass Oh, box. yes. But then वो हमें लग रहा था कि क्या बात है, हमें कोई नहीं पकड़ेगा. हाँ. लेकिन वो आके जब देखा प्रोफेसर ने, लगा अच्छा, फाट करके एक पढ़ा और लिया और चले गए. मेरा सबसे ट्राइड एंड यूज जो बहुत सक्सेसफुल होता है, इधर पेन से सब लिखा होता है और ऐसा बंदी होता है तो ऐसे से दिख के सब लंबे लंबे आंसर्स लिखे हैं मैंने फुल पाम्स पे. हम ऐसे ड्रॉ कर लेते थे पेंसिल से टेबल पे ना. हाँ, टेबल पे फॉर्मूला लिख देती थी एक दिन मैं. तो मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, मुझे मेमोरी आ गई अचानक से. मी एंड माय फ्रेंड्स, अगले दिन एग्जाम है, शाम को वी स्नीक्ड इनटू स्कूल और जो हमारी एग्जामिनेशन की बेंच थी ना, उस पे हमने आंसर्स लिखे. यू विल नॉट बिलीव, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम गए हैं अगले दिन सुबह एग्जाम देने के लिए कि अच्छा ठीक है बॉल पेन से लिखा है, किसी बेंच ही चेंज करेंगे. अब मुझे अचानक से याद आया, बेंच ही चेंज कर. ओह नो, इट्स लाइक दैट मोमेंट जब आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिल जाता है कि मैं प्रिपेयर, एंड वो आता ही नहीं है एग्जाम में. इट लुक्स फन, इट लुक्स इंटरेस्टिंग. 12th फेल आ रही है थिएटर्स में. Thank you. बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है, वो भी थिएटर में आ रही है, that you know talks about hope again. That is sort of, you know, Inspiring and Inspiring encouraging in a yeah. lot of ways. so I wish you all the very best. Thank you, Pareee. Thank you, Pareee. And what would you like to tell my audience? जितना प्यार आप लोगों ने अब तक दिया है हमारे ट्रेलर को, हमारे गानों को, प्लीज़ आप 27 अक्टूबर को सिनेमाज में जाएं, हमारी फिल्म देखें और इन्जॉय करें अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ. एंड सोशल मीडिया पे आके हमें टैग करें, हमें बताएं आपको फिल्म कैसी लगी. एंड या Go for it. 27th October, 12th fail. Radio Nasha.